Hello student, I am Assistant Professor Dr. Pallavi Chetan Patil from Sarat College. Our subject is Cost and Works Accounting 2. Up to now, we start our first chapter, that is overheads. Come on, very important topic we learn that classification of behavior, function-wise behavior. What is the functional-wise behavior? Sorry, functional-wise classification, factory overheads, administrative office overheads, selling overheads and distribution overheads. Okay, after that we already start behavior wise classification. Behavior wise classification, it means behavior, क्या क्या होता है behavior, nature, what is the how it change. It's a behavior wise classification. Read this slide. This classification is made on the basis of the behavior or nature of the overhead cost. Nature of expenses is such that some changes with the level of activity of an enterprises while other remain constant, fixed. Okay, all these things we already learn in the behavior wise classification. Fixed overheads, variable overheads and semi variable overheads, it's there. Next one is fixed overheads. I already tell you that fixed overheads very important. We already learned. This is just a revision because this is very important topic for your final exam. Okay, so revise all these things. Fixed overhead, I'm just reading this. These are expenses that remain unchanged in total for a given period despite inflations in volume of production. For example, rent, factory rent कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रोडक्शन हो ना हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाए ना जाए, यूर रेंट इज फिक्स. फैक्ट्री रेंट और द रेंट एंड टैक्सेस, मैनेजरियल सैलरी तो देनी पड़ेगी, वर्कर्स को वेजेस देने ही पड़ेंगे, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, पोस्टेज, स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द same constant. Okay, so we understand already this chapter. It means output in units. For 0 units you have factory rent 100. एक काम करो, फिक्स ओवरहेड्स आपको देखना है ना, समझना है ना, तो एक ध्यान में रखो. फिक्स ओवरहेड इट मींस फैक्ट्री का रेंट. क्या हमें वो फैक्ट्री का रेंट 0 आउटपुट पे, क्या मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा गया तो देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा. तो 0 आउटपुट पे आपका रेंट रहेगा 100. It's a fix. After that output is 1, then your rent is 100 or it's a 50 or it's a 120. No, it's constant. It's continuous constant. It's 100. After your output is 10, is your overhead is changed? Is your rent is changed? No, it's constant. And like on. Same graph is there, total fix which is 100 and it's changed like this way. Okay, output unit is changed. Are you getting my point? What I'm saying is this fixed overhead. The word fix is same, constant. The next one is your variable overhead. What is the meaning of variable? Variable, it means change. You already explained all these things, but this is for revision. Just read it. They represent those costs that vary in direct proportion to the volume of output. Volume of output, it means हम लोगों का वो changes होते हैं. फ्यूल, मैंने एग्जांपल दिया था, गाड़ी चलाई बहुत ज्यादा, आपने आपकी 2 व्हीलर है, आपने पूरी ड्राइव करके आए, आपका फ्यूल ज्यादा लगेगा. अगर आज के दिन कुछ नहीं किया, लॉकडाउन है, घर में बैठे, ऑब्वियसली फ्यूल कम ही होगा ना, 0 लेवल पे आ जाएगा. लाइक दिस वे इट चेंजेस. वेरिएबल मीन्स चेंजेस हो गया. सी द एग्जांपल इन द टेबल. इफ योर आउटपुट इज 0, variable is 0. See, in the example, fuel, power, commissions. Last PPT, I already tell you that for the fixed overheads, you have to remember one thing, or you have to mind में क्या रखना है, फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा. वेरिएबल जो है, इट्स अ कमीशन. कमीशन इट मीन्स क्या, हम लोगों ने कमीशन के किया था, 0 बुक्स बेच का है तो उसको 0 रुपीज कमीशन देंगे, 100 बुक्स बेच का है तो उसको 100 रुपीज देंगे. 100 रुपीज इज फिक्स फॉर 1 यूनिट. ओके, एक बुक का हम लोग 100 रुपया कमीशन देते हैं, तो उसके ऊपर से सी एक्सप्लेनेशन इज हियर. आउटपुट 0, देन यूर वेरिएबल इज 0, कमीशन भी उसको 0 ही देंगे, कुछ नहीं काम किया उसने. ओके, आफ्टर दैट 1 आउटपुट, देन यूर वेरिएबल इज 100. यस, one we already decided if he sell 1 book, then 100 rupees is your
commission. After that, he sell 10 books, it means 10 into 100, right? Like this way, his commission is changes, and here is your diagram. Okay, in the y-axis overhead is in rupees, in the x-axis volume of the production, output is changed on all these things. 100 rupees is constant because we are now giving 100 rupees only, right? And the last one is semi-variable or semi-fixed overheads. Already we start this point. Okay, the read here. The first one is there are certain expenses that neither fall in a category of fixed cost nor variable cost. Such expenses are known as semi-variable और semi-fixed overheads. दोनों भी बोल सकते हैं हम लोग उसे. Okay, they remain fixed at the certain level of the output. एक कुछ level तक वो fix रहेगा, while they are vary at the other level, but not in the proportion to dry output. Okay, for example, in a telephone charges, yes, टेलीफोन चार्जेस वो सेमी वेरिएबल रहेंगे ना. आपने एक प्लान लिया है वोडाफोन का या रिलायंस का या जियो का, वट एवर इट इज, आपने एक प्लान लिया है, आपने कांस्टेंट रखे अपने के 300 रुपीज. 300 तक हम लोग कितना जितना चाहिए उतना यूज कर सकते. बट आफ्टर 300 अगर वी आर यूजिंग दैट, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं ना एप्स, तो उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, तो बिल ज्यादा आता है पोस्टपेड में, राइट? तो टेलीफोन चार्जेस इज सेमी वेरिएबल. Rent, the rental elements is a fixed cost. Definitely rental elements fixed रहेंगे, हम लोगों ने सीखा ही है वही. Whereas charges for the calls made are the variable costs. Okay, now understand with this diagram and table. First, as usual, we learn all these things. Semi-variable, see the example. Semi-variable overheads of rupees 1,50,000 are constant. चाहे कुछ भी हो जाए, ये up to 75% these overheads constant रहेंगे, 1,50,000 ही रहेंगे, but up to what? Up to 75%. Okay, it means you have 7,500 unit. 7,500 यूनिट से आगे एक यूनिट भी होता है ना, तो आपका वो चेंज होगा, बट इंक्रीज बाय 10% ओवर 75. ओके, बट अप टू 85, मतलब 75 to 85% होने तक you have to spend 10% overhead. Okay, and then understand here, then increase by 20% over 85%. 85% के आगे अगर कुछ जाता है, बट अप टू 100% कैपेसिटी के ऊपर अगर कुछ जाता है, तो इट्स अ 20%. ओके, इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड हियर. It's very simple table. Capacity 50, 100, we write all these things. Output 5,000. Output 5,000. It means what is our maximum capacity? Is 7,000. 5,000, yes, definitely less. Then our semi-variable overhead is 1,50,000. Here we already mentioned. Okay. After that 60% 6,000 हो गया, तो 1,50,000 होंगे. हमारी कैपेसिटी कितनी है? 7,500. After that 7,000, yes, it's definitely less than 7,500, so it's a 1,50,000 definitely. But after 7,500 it comes after 8,000, then it's 20% increase होगा. 1,50,000 के ऊपर 20% means 1,65,000 is there. 9,000 85% से ज्यादा हो गया ना, तो इट्स 20%. हम लोग 10% ऊपर क्या था, अभी यहाँ पे नीचे 20% करे, तो यहाँ पे 85 अप टू 85%, इट्स 1,98,000. देखो, we can see here it's a change. Up to 7,500 it's constant. 1,50,000, and after that 10% increase, yes, definitely we accept it. After that 20% increase, we accept it. Okay, like this way. Now understand, x-axis, see the diagram, x-axis have a overheads in rupees, same overheads in units in y-axis. On y-axis semi overheads variable change हो रहे, ये देखो ये change हो रहे ना, sums are constant, and after that it changes. It understood this diagram? After here semi variable overheads are continuous having curve diagram, वो पूरा change हो रहा है. I hope you understand this. Okay, variable, semi-variable. Now the last one, this is very important and this is very easy topic.
control wise classification. The first one is controllable classification. Control wise classification में word क्या है? Control. Control it means you have to control on the expenses. Okay? Controllable overheads and uncontrollable overheads. चलो आज प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस बार नहीं होगा तो किसी की सैलरी नहीं देते. Is it controllable? No, it's not controllable. Okay, वो अनकंट्रोलेबल में आ जाएगा. ओके, कंट्रोलेबल मतलब हम लोग उसको कट कर सकते हैं. लास्ट ईयर वी ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट किसी का वर्किंग आवर्स कम ज्यादा कर सकते हैं, बोनस ज्यादा दे रहे तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं. इट्स कंट्रोलेबल. ओके, बट अनकंट्रोलेबल मीन्स वी हैव टू गिव सैलरी, रेंट, वी हैव टू पे रेंट. ओके, controllable classification is first one is controllable overheads. First one is overheads which can be easily controlled by management. जो मैनेजमेंट फटाक से डिसीजन ले सकते, आज से ये सब कुछ कट, यहाँ से आज से चाय आपको वर्कर्स को चाय नहीं दी जाएगी. It means which can be controlled by the management through exercising various steps are called as a controllable overheads. Example, indirect material. Yes, definitely उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, right? And the second one is uncontrollable overheads. Overheads which cannot be controlled, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं. रेंट तो देना ही पड़ेगा, हमें सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. Overheads which cannot be controlled, whatever the steps taken by the management are called uncontrollable overheads. For example, rent, taxes, office salaries, etc. I hope you understand this classification. Okay, thank you.